Hello everyone, this is Nikhil Shinde. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the Java static initializer block hackerang problem. So let's go. A static initialization block are executed when the class is loaded and you can initialize the static variable in those blocks. It's time to test your knowledge of static initialization block. You can read about here. So यहाँ पे उन लोगों ने एक लिंक हाइपरलिंक दी हुई है. यहाँ पे जाके इट्स अ इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक. सो यहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में. सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिटेल्ड कंसेप्ट. सो आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप जाके पढ़ सकते हो. यहाँ पे हम डायरेक्टली जाते हैं अब input format. There are the two lines of input. The first line is contains b, the breadth of parallelogram, and the next line is contains h, the height of parallelogram. Though so these are the some constraints related to b and h. The output format is like if both values are greater than 0, then the main method must output of area of parallelogram, and otherwise print java.lang.exception breadth and height must be positive. Okay, without quotes. Sample input 1 है 1 and 3, that's b, that is breadth is 1 and height is 3. So b into h, that is 1 into 3 is 3. We have to print output as a 3, and for this sample output 2, sample input 2, b is minus 1 and h is 2. So b negative आ गया, इसलिए we have to print java.lang.exception breadth and height must be in positive. Okay, it's a very easy problem. The core concept is like you should know about the Java static initializer block. In the solution class, here in the solution class, you should write the syntax for static block. इस तरह से. This is the basic syntax of static block. But initially we should declare a b and h, that is breadth and h. So यहाँ पे हम public static int b, int है इसलिए हम int लेंगे. And similarly for h, public static int h. When you see carefully in main class, they took a flag. So we need to declare here a flag also in the data type boolean, public static boolean flag. In static block, so when you read carefully this problem, you have to take the input from users. So that's why we're gonna use a scanner as a class for taking input from users. So scanner scan new, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्कैन. तो न्यू स्कैनर system.in, बी लेना है अपन को. नेक्स्ट int, similarly for h, scan dot next int. Now we have to use if condition because they told us the if b is less than or h is less than 0, then output should be java.lang.exception breadth and height must be in positive. So that's why we're gonna use a conditional statement if. हम उल्टी कंडीशन लगाएंगे because it's the easiest one, which is greater than. उन लोगों ने दिए less than 0, here we're gonna use a greater than 0, so it's the easiest one.
सिंपली फ्लैग को हम ट्रू कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज फ्लैग इज इन द बुलियन data type. So that's why there are the two possibilities. Either flag is true or flag is false. And else में हम डालेंगे, प्रिंट करेंगे java dot lang dot exception. ये जो सेकेंड कंडीशन है वो, if b is less than 0 or h is less than 0. टाइप करने पेक्षा हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. कॉपी करो और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर सकते हैं. इट्स इजी एंड टाइम सेविंग ट्रिक. ऐसे स्मार्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, लगाना पड़ता है बेसिकली, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है ना. ये हो गया. फ्लैग को फॉल्स करेंगे और ये जो स्कैन हमने लिया है उसको क्लोज भी करना पड़ता, इसलिए स्कैन डॉट क्लोज. सिस्टम डॉट स्पेलिंग मिस्टेक. ये कैपिटल में लिखना पड़ता. ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. So let's run the code. Let's see it is correct or not. Yeah, we got the correct output. So let's submit the code. Yes, we successfully clear the all the test cases. So if it is useful for you, then share to it to your friends. Like करो, comment करो, subscribe करो. Thank you.